Hey everyone, welcome back to the channel. Today we are diving into map in Java collection. आप शायद जानते ही होंगे मैप के बारे में क्योंकि जावा में कलेक्शन यूज किया जाता है जिसमें मैप एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फीचर माना जाता है. सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस स्टोर की वैल्यू पेयर. तो इफ आई टॉक अबाउट द की एंड वैल्यू पेयर तो ये इसमें एक की होती है एक वैल्यू होती है. वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मैप and different types of map in Java and how to use HashMap with a hands-on example. So we are going to dive into that feature. So चलिए शुरू करते हैं. Let's get started. तो पहले हम जानेंगे what is map, जिसके मैं आपको डेफिनेशन बता देना चाहता हूँ. That a map is a collection we can say which stores data in a key value pair. ये कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ हैंड्स ऑन एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा. आपने सुना ही होगा लिस्ट. तो वी कैन से अनलाइक लिस्ट और सेट्स. आपने लिस्ट और सेट्स के बारे में पढ़ा ही होगा. आने वाली वीडियो में आपको इसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा. अ मैप डज नॉट अलाउ, ये एक अलग से पॉइंट है तो मैं अलग से हाईलाइट करके आपको बताऊंगा. अ मैप does not allow duplicate keys but value can be duplicate. okay, वैल्यू इसमें डुप्लीकेट हो सकती है. कैसे होगी मैं आपको आगे बताता हूं. तो मैप यूज करने से पहले कॉमनली इसमें 3 इम्प्लीमेंटेशन होते हैं. जैसे कि मैं आपको बात करूं कि इफ यू आर यूजिंग अ हैश मैप देयर इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश मैप विच कैन वी से इन अ शॉर्ट में बताऊं फास्ट एंड अनऑर्डर होता है. लिंक्ड हैश मैप जो कि मेंटेन्स करता है आपका मेंटेन्स करता है आपका इंसर्शन ऑर्डर. एंड ट्री मैप जो सॉर्टेड रहता है बाय द की. So let's get started for the hash map, which is the most commonly used implementation. We are creating a hash map object. तो वो कैसे करेंगे. एक hash map import किया जाएगा. hash map को यूज करना है. So we have to import map which is a key value pair. So key should be string. We are taking as an example. Then integer as a value and students. Suppose students marks. हम स्टूडेंट मार्क्स को एक एज एन एग्जांपल लेंगे. न्यू हैश मैप. So like that you can implement hash map as well, but you have to import it first. So by the map there is a java.util. From this import section you can import the map and as well as hash map which can automatically take as util hash map. okay, so यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है मैप का. एंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी ऑब्जेक्ट हुआ है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैप रहेगा, जो वेरिएबल आया हुआ है स्टूडेंट्स मार्क्स, ये अभी रहेगा नल. दिस इज नल राइट नाउ बट यू हैव टू एडिंग इट. so you can dynamically add but for understanding purpose I am adding it as statically. so key value pair में हम उसके ऐड करेंगे like students marks dot put. so here we are using put. whatever you have to add it inside the variable as a key value pair. तो आपको put का यूज करना रहता है इधर. और just like add यूज करते हैं लिस्ट में, same as like that. so here's put. suppose Alice marks is like 85 and students dot put Bob 90. students marks dot put suppose Charlie. so here's suppose 78. so now
these all value are adding it to the student marks variable. अगर हमें इससे डिस्प्ले कराना है कि हमारा कैसा बना हुआ है तो डिस्प्ले द हैश मैप, हम इसको आपको दिखा सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टूडेंट मार्क्स को रन कराने के लिए राइट क्लिक ऑन दैट एंड रन मैप एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा टाइम लेता है रन करने के लिए। सो नाउ हियर यू कैन सी student marks as Bob 90, Alice 85, Charlie 78. Now if you want to access values using key, you can use it like system dot out dot print Alan. So like if you want to get it the Alice marks, student marks dot get Alice. So like that you can take it as separately Alice marks. Now rerun it again. Here now I can read it directly. Now you can see Alice marks is 85. It can iterate you according to the name. Okay, so now if you want to iterate it, hold the hash map, iterating over a hash map. So for map dot entry string and integer, we are using as key value pair. So here as well, integer, suppose give entry student marks dot entry set. So system, so we are copying it here, and paste. Now if you want to get the key like the name, so entry dot get key, there's a function inside. We can as pending its code plus entry dot get value. Okay, so if you run this, you can see everything is one by one. Yeah, here you can see Bob scored 90, Alice scored 85, and Charlie scored 78. So now I'm taking as a summary. So in this example, we have created a hash map. We created a hash map to store student names and their marks. We use dot put to add key value pair and dot get to retrieve a value using a key. Finally, we iterated through the hash map using a for each loop and dot entry set to print all key value pairs. So now I want to discuss about like some key points and some common mistakes which generally developers can do. So here are some important things to remember when using maps. Okay, so the first one, keys must be unique. Okay, key must be unique. Like if you insert the same key again, it overrides the existing values. Then the second thing you have to remember, null keys and values. It means like hash map allows one null key and multiple null values. Okay, third one, you have to sync the insertion order. Insertion order means like hash map does not maintain order. Okay, I'm telling like does not maintain order. So if order is important, use linked hash map. If or I'm making as a note like
if order is important, right, then use linked hash map. Okay, do this again, like student marks dot put Alice again and update it as like 92, then it can be override. And if you run it again, just wait a second, it is override Alice score 92. So that's the mistake you don't need to follow. So guys, in this video we learn about what is hash map, different type of maps in Java, and how to use hash map with example. And that's a wrap up, guys. So we learned about map, its key value structure, and how to use hash map in Java. If you found this video helpful, like and subscribe and hit the bell icon for more Java tutorials.